All right, so we have cut across to the Mumbai police briefing. This is going to be on the Saif Ali Khan stabbing mystery. The Mumbai police there is all set to address the press conference. 12 days, remember, after the attack, the Mumbai police is holding an official briefing where they will brief the media about what happened on the night when Saif Ali Khan was stabbed, the sequence of events, the arrest that took place. We are building up to that briefing. The frame is on your screen. The Mumbai police briefing will start in any moment from now, where they will be giving out details of the Saif stabbing mystery. लोकांचे माईक तर ऍडजस्ट होऊ दे ना. सर्वात पुढेच आहे एबीपी, हेच आहेत. असं आपण घेऊ शकत नाही. एक मिनिट, आपण नंबर एक सगळ्यांचे सेट झालेले आहे. याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? नाहीतर कोणीतरी ओरडणार आहे आणि तुम्हीच त्याच्यावर ओरडणार आहेत. ठीक आहे, मग कसा आपण फॉर्मॅट ठरवू? कारण आपल्याकडे मराठी मीडिया आहे, हिंदी मीडिया आहे, इंग्लिश मीडिया आहे. मी एक शॉर्ट ओपनिंग स्टेटमेंट देतो, फक्त इंट्रोडक्टरी, त्याच्यामध्ये काय नाही, इंट्रोडक्शन, आणि त्याचे नंतर तुम्ही प्रश्न विचारा. आता आपापसात ठरवून द्या. आपण मराठीचे प्रश्न पहिले घेऊ, पहिले मराठीचे प्रश्न घेऊ, मग नंतर इंग्रजीचे, मग नंतर हिंदीचे. बरोबर आहे? आता याच्यामुळे मी सांगतो की तुम्हीच ठरवा, नाहीतर अधूनमधून तुम्हीच. मराठी पहिले आपण घेऊ, त्याच्यानंतर काय घ्यायचे तुम्ही सांगा. मग आपापसात हे करू नका. ठीक आहे, मग मी ओपनिंग स्टेटमेंट मराठीत, इंग्रजीत आणि हिंदीत देतो. त्याचे नंतर आपण प्रश्नोत्तरवर जाऊ. बरोबर आहे? आता जरा हे करा आणि आपले मोबाईल फोन जर असेल तो सुद्धा सायलेंट मोडवर ठेवा. आप भाई साहब पीछे. All right, so that is the Mumbai police press conference that is going to begin in just some moments from now. The final checks are underway. मराठीत रोल करू. वांद्रे पोलीस ठाणे मुंबई गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 याची अतिशय चांगली क्लू बेस्ड डिटेक्शन DCP झोन 9 त्याची टीमने गुन्हे शाखे मुंबई याच्या सहयोगाने केलेली आहे. अद्यापपर्यंतची तपासामध्ये आपल्याला आरोपीचे विरुद्ध भक्कम पुरावा मिळालेला आहे. तपासाचे काही पैलू सध्या चालू आहे आणि याच्यामध्ये आमची पुढची तपास चालू आहे. बांद्रा पुलिस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 ये एक बहुत ही अच्छी क्लू बेस्ड डिटेक्शन है जो कि DCP जोन 9 उनकी टीम और मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई है. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है. आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है. बांद्रा पुलिस स्टेशन CR number 85/2025 is an excellent clue-based detection made by DCP Zone 9, his team in conjugation with the Mumbai Crime Branch. So far in the investigation, we have found ample evidence against the accused and further investigation is going on. आता आपण मराठीत प्रश्न घेऊ. सर, तपासामध्ये ते आरोपीचे फिंगरप्रिंट होते ते सुरुवातीला जुळले असं सांगितलं गेलं. मात्र त्यानंतर असं समोर आलं की जुळलेले नाही आहेत. सुरुवातीला 19 प्रिंट सापडले होते, नंतर 200 पर्यंत तो आकडा वाढला. तर सध्या स्थिती काय, फिंगरप्रिंट्स मिळाले किंवा त्याबद्दल काही सांगता येईल? फिंगरप्रिंट्स बाबत जे काय संभ्रम आहे
मी तो दूर करण्याचे प्रयत्न करतो. फिंगरप्रिंट्सची कुठली अधिकारी Commissioner is speaking about the fingerprints now. ॲज ऑन डेट मिळालेली नाही. आम्ही सुद्धा रिपोर्टची प्रतीक्षेत आहोत. They are waiting the report. The report till date has not been submitted yet. The fingerprint report is yet to be submitted, is what the Mumbai police is saying. दिसतोय सर, तो मात्र त्यांचा मुलगा नाही. तर Big revelation by Mumbai police that no finger. त्यांचे वडिलांचे स्टेटमेंट बद्दल मी काय सांगू शकत नाही. Statement of the father of the मी हे accused, the police is ठामपणे सांगू refusing to शकतो comment. The police is saying. आरोपी पकडलेला आहे त्याचे विरुद्ध अद्यापर्यंत तपासामध्ये भक्कम पुरावा आपल्याला मिळालेला आहे, जे कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये स्टँड करणार आहेत. कोणते पुरावा त्याबद्दल काही सांगता येईल? आपण तपासामध्ये टोटल 10 दिवस त्याचा रिमांड झाला. आपल्याला ओरल, फिजिकल आणि टेक्निकल या सर्व स्वरूपाचे पुरावे मिळालेले आहे आणि त्याच्यावर आपला काही इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये वर्कआउट सुद्धा चालू आहे. Out this जे सर त्याच्या घरी जे सैफ अली खानच्या घरी जे लोक होती ज्यांनी त्याचा एन्काउंटर झालेला आरोपी बरोबर त्यांच्यातला कोणी समोरासमोर आलेले एन्काउंटर त्याच्यातलं कोणी ओळखलंय का झालंय का त्या संदर्भात काही सांगता येईल? नाही. आयपीचं नियोजन करण्यात येईल. अद्यापर्यंत आयपी नियोजन केलेला नाही. त्याचं रिमांड संपतोय तर पोलीस आणखी वाढीव रिमांड मागणार काय? तो उद्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्टामध्ये वाढीव रिमांडसाठी प्रयत्न करणार. tomorrow the police will go for an extension of the remand of the main accused in the case in the court. The investigative officer will present to the case reasons for which the remand of the main accused should be extended. That is tomorrow. इतर आरोपींच्या सहभागाची आढळून आलेली आहे. नाही, इतर कुठलाही आरोपी अद्यापर्यंत आढळून आलेला नाही. There is no other आरोपी accused ज्या ज्या that has been arrested in this case so far. त्या सर्व लोकांची पण चौकशी करतोय. तो एक People who are investigation प्रक्रियेच्या भाग आहे. linked to this case allegedly are only being probed so far. There are no. हो, पुरावे आम्हाला मिळालेले आहेत. भरपूर भक्कम पुरावे आम्हाला मिळाले आहेत. डॉक्युमेंटरी Yes, we have strong documentary evidence. We have strong evidence against the main accused, is what the Mumbai police says. हाँ, हिंदी में बोलिए. सबसे पहले समझिए कि फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ, जो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा कर पाएंगे आप? क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट के मामले? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था. मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली. देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे. सीआईडी ने जो जांच की है, शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है क्या? इसको आपको रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट है? एक करके आप एक करके बात कीजिए, नहीं तो मेरा सवाल ये है एविडेंस मिले हैं. सर, हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं है, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती. हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है. जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो फेस की बात क्यों करें? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं है, इसलिए? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती. हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है. जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं. तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले. ये सब उसी का भाग है. इस केस के अंदर आईओ को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे. बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट पीआई थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे. और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है जब तक दूसरे आदमी को हैंड ओवर नहीं किया जाता.
इस केस को लेकर सैफ अली खान के घर से क्या सबूत मिले हुए हैं? इस केस को लेकर सैफ अली खान के घर से क्या सबूत मिले? जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले। सर अब तक किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया? अब तक किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया? कितने लोगों का स्टेटमेंट? कितने लोगों का सर स्टेटमेंट? देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवलपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है। कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एग्जाम डेट नाइट कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर एग्जाम डेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइट हो गया। क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था कि? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित, गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। सर, लीलावती अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी सस्पेंस। इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। तुरंत बाद क्या सैफ अली खान की तरफ से फोन किया गया था, पुलिस को इंटीमेट किया गया था? सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था। हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। लीलावती हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल मुंबई पुलिस की टीम गई है, क्या वहाँ पे अब तक पूछताछ हुई है? क्या जो आरोपी के पास से सिम कार्ड मिला है, क्या उस महिला बरामद हुई है? पूछताछ देखिए, आरोपी है ये बांग्लादेश से आने के बाद कुछ दिन कलकत्ता में भी रहा था और कलकत्ता में जिन भी लोगों के संपर्क में आया या जिन भी लोगों ने इसकी मदद की, उन सब लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए हमारी टीम वहां पे गई थी। इसलिए कलकत्ता का जो एंगल है उसकी भी हम तपासनी कर रहे हैं। जो आरोपी सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे क्या? 11th और 12th फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे थे उस वक्त? फ्रंट गेट पे, बैक गेट पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या वो उस वक्त फंक्शनल थे? Any questions in English, please, before I close? In English, in English, please. In English, please. English, please. Last questions in English, please, before I conclude. English media. Anybody from the English media? Yes, yes. Hold on. Yes, ma'am. Ma'am, regarding the making have been received as on date by Mumbai police. Thank you so much. The Mumbai police, they are giving very sketchy details on what happened on the night when Saif Ali Khan was stabbed. To take you through what the Mumbai police has said so far in their press briefing, they said that a clue-based investigation was carried by the DCP Zone 9 Mumbai police. They've also said that it was an excellent clue-based investigation that the Mumbai police had found, and they are reiterating the fact that the person they have arrested is the main attacker. We have Sandeep, who is patched with us on the phone line. Sandeep, please take us through the details of the Mumbai police briefing. I believe you had asked some questions. However, the details that they've given are very sketchy. Multiple questions that needs to be in fact answered right now, but we saw additional CP Paramjit Singh Dhaya and also Dikshit Gedam, the DCP of Zone 9, running away from the questions of Republic TV. With video journalist Nanda Sandeep Singh for Republic TV. All right, so there are many unanswered questions that still remain. The Mumbai police giving the details out there but not answering every question. We also have Shravan joining us live from the newsroom. Shravan, over to you.
Additional Commissioner of Police, Western Region of Mumbai Police, Paramjit Singh Dahiya, is that they're calling this an excellent clue-based investigation. Now, they haven't really put out any details of the nature of evidence that has been collected so far. In terms of questions that remain still completely unanswered is the fact that, one, whether at all there was any insider help or not, because given the fact that they themselves earlier did make this assertion that the accused came into Mumbai just about 5 to 6 months before the incident took place, and then he did not go to Bandra, he was in Worli and in Thane. So when did he actually carry out the recce? How did he really decide that he is going to carry out a burglary at Saif Ali Khan's residence? None of which really comes out from the press conference that has been done by the Mumbai police. Now first, let's quickly take you through what is it that they had to say. One, with regards to the nature of the investigation that has been carried out, they say that they have collected enough evidence. The exact word was ample evidence that has been gathered against the accused. They have called it clue-based. Now, we do not know exactly what are the clues that they had actually received or they had gathered over a period of time. That really does not really come in at this point in time. The other important aspect is that the medico-legal report of the Lilavati Hospital, which indicates that Saif Ali Khan was brought in around 4:11 in the morning, or that was the time when he was admitted. Mumbai police now says that this isn't correct. They are making an assertion yet again that he was brought immediately after the incident took place. In fact, we're going to play out the exact timing that was mentioned by the additional CP. But having said that, then who exactly is lying? When did Lilavati Hospital really admit Saif Ali Khan? Was it around 2:40 in the morning, or was it as per their medico-legal report that he had entered the hospital around 4 o'clock in the morning? So we'll try and once again listen in to what the additional CP had to say. देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में। क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम फिर फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों करें? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। Report that was prepared, and that's what sources indicated with regards to the fingerprints. But then again, Mumbai police coming on record saying that as of today, they need forensic reports with regards to the fingerprints. All right, I believe we have lost that line with Shravan, but that was the Mumbai police briefing that you just heard, where they gave out several points. However, the unanswered questions still remain. The Mumbai police said that the actor reached the hospital at around 2:47 a.m. at hospital, and that they have the CCTV footage from the Lilavati Hospital. Let's listen in to what the Mumbai police had to say. देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में। क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो की हम एक्सप्लोर, आपल्याला ओरल, फिजिकल आणि टेक्निकल या सर्व स्वरूपाचे पुरावे मिळालेले आहे।
आणि त्याच्यावर आपला काही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये वर्कआउट सुद्धा चालू आहे. जे सर त्याच्या घरी जे सैफ अली खानच्या घरी जे लोक होती ज्यांनी त्याचा एन्काउंटर झालेला आरोपी बरोबर त्यांच्यातलं कोणी म्हणजे समोरासमोर आलेले एन्काउंटर त्याच्यातलं कोणी ओळखलंय का आरोपीला किंवा त्यांची आयपी झालंय का त्या संदर्भात काही सांगते? नाही, आयपीचं नियोजन करण्यात येईल. अद्यापर्यंत आयपी नियोजन केलेला नाही. रिमांड संपतोय ते पोलीस आणखी वाढीव रिमांड मागणार काय? तो उद्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्टामध्ये वाढीव रिमांडसाठी प्रयत्न करणार. हिंदी मुख्य आरोपी जो आपल्या अटकेमध्ये आहे त्याच्या व्यतिरिक्त इतर काही आरोपींचा सहभाग यामध्ये निष्पन्न होतो आहे का? कारण काही लोकांची आपण चौकशी करतो त्यामध्ये काही बाबी आपल्याला इतर आरोपींच्या सहभागाची आढळून आलेली आहे. नाही, इतर कुठलाही आरोपी अद्यापर्यंत आढळून आलेला नाही. परंतु आरोपी ज्या ज्या लोकांच्या संपर्कमध्ये आला होता त्या सर्व लोकांची आपण चौकशी करतोय. तो एक इन्व्हेस्टिगेशनची प्रक्रियेचा भाग आहे. सर, आरोपी हा बांगलादेशी असल्याचे काही पुरावे आपल्याला लागले? हो, पुरावे आम्हाला मिळालेले आहे. भरपूर भक्कम पुरावे आम्हाला मिळाले आहे. डॉक्युमेंटरी पुरावे मिळालेले आहे. टेक्निकल पुरावे आपल्याला मिळालेले आहेत. हाँ, हिंदी में बोलिए. फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ, तो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या अधिकारी कोई जानकारी साझा कर पाएंगे? क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट के मामले? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था. मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है. पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट के रिमांड में. क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे. फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि सीआईडी ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है. क्या हमारे पास ये जानकारी है? मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं. एक एक करके आप एक एक करके बात कीजिए, नहीं तो Let me also go inside the DCP's office where the press conference took place. Akhil, first to you. You did make an attempt to ask a question to the Mumbai police. Were you allowed, first of all, to take that question to the additional CP? Well, Shravan, if you see at this point in time, we asked this question that whether at that point in time, if you see a CCTV was installed on 11th floor or 12th floor or not. On this regard, the senior officer basically did not speak or made any comment in that regard that whether CCTV was installed on 11th floor or 12th floor or not. This was not made clear by this officer. Apart from that, if you see one more thing he has highlighted that at that point in time when the incident took place, it's the same accused which the Mumbai police has nabbed earlier. So through different means, through technical means as well, physical means as well, and oral means as well, they have made it to the conclusion that it's the same accused who was nabbed by the Mumbai police. Third key important highlight of this entire briefing was that the fingerprints reports are still not out. Fourth important point which we would like to highlight is that facial recognition test has not been done. If needed, then they will do it. So these are the four key aspects of the press briefing done by the senior officer in that regard. Back to you, Shravan. Sandeep, with regards to this purported CID report based on which many have been reporting that the fingerprints do not really match, what is it that the Mumbai police has to say? Are they rejecting, whether at all there is any CID report to begin with? See, Shravan, at this point in time, Mumbai police is not in a position to either accept neither reject. Now, when we talked about the fingerprints and the reports of it, the Mumbai police mentioned that they haven't received any kind of such reports. In fact, he denied to speak on the media reports that have been sourced by CID Pune. But ultimately, the Mumbai police neither accepted with the fact that they have got the report, neither they confirmed that the fingerprints has not matched. So a very confusing answer, or you can say they have found between the line kind of an answer, and they responded in such a manner that only few questions were taken.
It was not a brief press conference. Remember, yesterday, Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, particularly mentioned that the CP would clarify the doubts of media, and in fact, the kind of speculation that is being in fact done, that should not happen. But ultimately, whenever we asked question regarding the hexablade as well, remember, earlier Mumbai police went on to say that it was hexablade through which Saif Ali Khan was attacked. Later on, that hexablade turned into a knife. He did not respond whether the CCTV footages were installed on the 11th or the 12th floor of that very apartment where Saif Ali Khan resides, whether those CCTV that were installed in the residence of Saif Ali Khan, whether they were in a working condition or not. So multiple questions we put out before the additional CP Paramjit Singh Daya and Dikshit Gedam, the DCP, but ultimately none of the officer in fact responded to the question that we have been asking continuously. Since day one, we have been asking whether he is the same accused or not. The Mumbai police says that they are very confident with the fact that he is the only person who had attacked Saif Ali Khan. Then the question is that if he is the same person, why Mumbai police had to write this in the remand copy that they are yet to do the facial recognition test, and why so far Mumbai police has not done the facial recognition test. So multiple questions that are still pending, which needs to be answered, but ultimately Mumbai police has dodged all the questions that we have put before them. Well, thank you very much, Sandeep and Akhil, for getting us the latest. In fact, this happens to be the first Mumbai police's detailed version on this attack that took place on actor Saif Ali Khan. But remember, there are several unanswered questions even now. Director, the taste of success. The Suryakumar Yadav-led Indian cricket team has been extremely dominant so far in the ongoing India vs England 5-match T20I series. India are 2-0 up in the series after clinching a thriller in Chennai. The third match of the ongoing T20I series will be played in the Niranjan Shah Stadium in Rajkot, and India will look to seal the series with a win. India, under the leadership of Suryakumar Yadav, are yet to lose a T20I series after their T20 World Cup triumph against South Africa in Barbados in 2024. The India vs England T20I series will be followed by a 3-match ODI series just before the beginning of the ICC Champions Trophy. The Indian T20I team looks settled as of now, with all of the departments firing, but it is Suryakumar Yadav's form that has been concerning for the Indian team as far as the ongoing series against England is concerned. Indian captain Suryakumar Yadav will be expected to get back to his belligerent best after a prolonged lean run when his uber-aggressive unit takes on a struggling England in the third T20I and will be aiming for a series-sealing victory. Since Suryakumar took over as Indian T20I captain last year, India have hardly put a foot wrong, but his own form has tailed off massively. The year gone by was the least productive for arguably the world's best T20I batter, as he totaled 429 runs in 17 innings at a meagre average of just 26.81. Suryakumar Yadav averaged close to 35 in 2021, which was his first year in international cricket, before raising it to more than 45 in the following 2 years. The 34-year-old from Mumbai is yet to fire in the 5-match series against England and will have a point to prove following his exclusion from the ODI Champions Trophy squad. Though he is India's very own Mr. 360, Sky is at his finest when he is toying with the opposition attacks with runs behind the wicket.
It's worth noting that he perished while attempting his signature pickup shot of a slower ball in the series opener before playing one onto his stumps in the last game. Tilak Verma's individual brilliance got India over the line in Chennai, but besides Suryakumar's lack of runs, Sanju Samson's short ball shortcomings were also highlighted. Samson, who had a memorable series in South Africa, has been dismissed to the short ball from Jofra Archer twice in the series. It is something he would look to correct on a Rajkot pitch, which is usually full of runs and is expected to be another happy. From censorship fears to trending tweets, internet is asking if DeepSeek can do what ChatGPT can. After Selena Gomez's breakdown moment, Americans are asking if she is actually American. We tell you all that is trending on the internet at 7:30 p.m. with me, Suesha Sawant. Welcome back, viewers. You're watching Republic TV. I'm Gesu Bhardwaj, and just moments ago, the Mumbai police covered its media briefing regarding the Saif attack probe. In fact, the police has said that there are enough and more proofs against the accused. They also claimed that they have caught the right accused. In fact, the police also made a bold statement saying that the investigation is going in the correct direction and is on an excellent track. This comes after there were multiple questions being raised over the botched up case of the Saif stabbing incident. Police has also said that it has collected all proofs against the accused, who is now in custody since the last week or even more, Shariful Islam. The police has finally cleared all air around the accused, saying that they have arrested the right person. In fact, the police also cleared that no arrests so far have been made in West Bengal, where a Mumbai police team has reached, a two-member team has reached to look at the links of the entire Saif stabbing case. Police also maintained its stand on the case, saying that more links are involved in the Saif stabbing incident. Listen in to Mumbai Police's DCP first, and then we will tell you more about the story. इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में। क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम फिर फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों करें? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में। क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। केस को लेकर सैफ खान के घर से क्या-क्या सबूत मिले? जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं।
कितने लोग का सर स्टेटमेंट? देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवळपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है। कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। एग्जाम डेट नाइफ कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर एग्जाम डेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइफ हो गया। क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। सर, लीलावती अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवळपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे, क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। Also joining us on the broadcast is my colleague Akhil, who is right outside the DCP's office in Bandra. Akhil, tell us more about the briefing. Touch upon the important points that the Mumbai police kept at the press briefing. Akhil. Well, if you see, additional CP Mr. Dahiya highlighted few important points, that the accused who was arrested earlier is the same accused. So there was a little bit of confusion in that regard, whether the accused in the CCTV footage and the actual accused who was arrested by the Mumbai police, is it the same or not? So at this point in time, Mumbai police has confirmed that they have got physical evidence, oral evidence and technical evidence as well in this case, and now they have confirmed that it's the same accused. Point number 2, which is being highlighted by Mr. Dahiya, is that if you see earlier what we have seen, that there were a lot of speculation that at what time Saif Ali Khan arrived at the very hospital. Mumbai police has confirmed this, that at around 2:47 a.m. Saif Ali Khan arrived at the very hospital. But the question remains there, because if you see, when the medical legal report was filed, in that medical legal report, which was duly signed by Afsar Zadi, there the timing was mentioned 4:11 a.m. So why it took so long for do the verification and the technical work on the administrative front? So that question is still lingering on. The third important point which the Mumbai police highlighted is that at that point in time, when the accused entered into that apartment, so at this point in time, if you see, the Mumbai police has not answered this question, that whether on the 11th floor and 12th floor, whether any CCTV cameras were installed or not. So it still remains a mystery. That I personally asked this question to Mr. Dahiya, but he didn't respond that whether CCTV cameras were installed on 11th floor and 12th floor or not. Back to you in the studio. Right, Akhil. In fact, also tell us more about what they have said in terms of their investigation being on track and the arrests made in West Bengal. See, earlier what we have seen, that there were a lot of speculation that whether the fingerprints of the arrested accused was matched or not. So at this point in time, Mumbai police has made it very clear that if you see, at this point in time, the report is not out yet. And we also again asked him regarding the facial recognition, because earlier what we have seen, that the accused lawyer has been constantly saying this, that if you see the person in the CCTV footage is different from the person who Mumbai police has arrested. And he has been constantly claiming, the accused lawyer has been constantly claiming, because if you see the facial structure, nostril structure, apart from that, the jawline and the eyes color and hair color as well. So on that regard, what we have been seeing, that the accused lawyer has been constantly claiming that it's not the same person, but now the Mumbai police has made it very clear that he's the same person. On that regard, when we asked this question to Mumbai police, that whether facial recognition has been done so far or not, the Mumbai police has said that as of now, facial recognition has not been done. If needed, then they will follow the process further from here on.
Right, Akhil. In fact, thanks for joining us on the broadcast to get us details on the story. I would once again like to reiterate that the Mumbai police finally, after so many days of open speculation over the investigation, held a press briefing at 5 p.m. today, just moments ago, where the Mumbai police also cleared that the case is going in the right direction. Akhil, we will play the Mumbai police's press briefing bite once more for our viewers. Stay here with us, Akhil. देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे, क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम फिर फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों करें? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। While Akhil continues to join us on the broadcast, we're also being joined by my colleague Sandeep, also live from Mumbai. Sandeep, the police has said that the investigation is going in an excellent direction. They have enough and more proof, and they've also arrested the right suspect, Shariful Islam, that is in question. However, fingerprints have not matched. Face recognition has not been done. Botched up case yet again. Tell us more about this also, Sandeep. See, there are a lot of things that Mumbai police needs to answer, and the biggest question that I have been in fact asking the additional CP Paramjit Singh Dahiya again and again, that how come hexablade turned into a knife? And remember, if you go about the theory of hexablade being used in the attack, hexablade can be broken, but ultimately a knife that has been in fact claimed that was procured from the hotel where the accused used to work in the past. How can a knife can be broken into 3 pieces when someone attacks on any person? So a lot of question that needs to be responded, but as Mumbai police leaves multiple questions unanswered. Stay tuned to Republic TV for more on the Saif Ali Khan stabbing case.
on 6 Stories at 6. We get you a power-packed lineup of all the top stories of the day. What is deep sea and how it has disrupted the entire market? We'll get you more from our experts on the show. Also, the latest in the water wars ahead of the Delhi Assembly elections and how Trump is once again threatening tariffs on countries that also includes India. More at 6 p.m. with me, Rakshita Mishra. Welcome back to Republic TV. And amid a growing war of words over Yamuna's water quality, Uttar Pradesh Chief Minister has launched a fresh attack on the Aam Aadmi Party, saying that Delhi is suffering because of AAP's sins. Meanwhile, Chief Minister Atishi met Election Commission seeking poll panel's intervention into the matter. On the other hand, Haryana's Chief Minister has also said that he will sue Arvind Kejriwal for his false claims over the poisoning of the Yamuna water caused by Haryana. This comes as the national capital is inching closer to the assembly polls scheduled for the 5th of February.